अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स AATO ने इंडिया टूरिज्म के साथ मिलकर कल शाम में टूरिज्म स्टेक होल्ड मीट का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रशासन की पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी मुख्य अतिथि थी। विशेष अतिथि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख डॉक्टर शिवा पेरुमान के अलावा अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर, इंडिया टूरिज्म के सहायक निदेशक वेल मुरुगन, टूर एसोसिएशन के द्वीप समूह चैप्टर के मोहम्मद H जाडवेद, AATO के अध्यक्ष M विनोद के अलावा पर्यटन जगत से जुड़े लोग और हितधारक मौजूद रहे। मुख्य अतिथि पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी और अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर इस मीट का शुभारंभ किया। AATO के M विनोद ने उपस्थिति का स्वागत किया। आज ये जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स मीट है, मेरे ख्याल से जब भी हमारा मीटिंग होता है तो अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का या तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ या इंडिया टूरिज्म के साथ होता है। मैडम, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज का जो मीटिंग है इसमें हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किया, होटेलियर्स और ऑफिशियल्स, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सबको हमने बुलाया आज कि स्टेक होल्डर्स मीटिंग को हम सबके साथ मिलकर एक पहला इनिशिएटिव है मैडम हमने जो लिया है, और हमें उम्मीद है कि आगे चलकर इसको हम और बेहतर स्तर में करेंगे। तो अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स मैडम 2005 में बना हुआ एक एसोसिएशन है। हम लोगों ने 18 लोगों से इसकी जर्नी शुरू की। आज हमारे पास 138 मेंबर है। हम टूरिज्म डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर निरंतर ये प्रयास करते हैं कि पर्यटन उद्योग में हमसे जो कंट्रीब्यूशन हो हम उसमें आप लोगों के सहयोग से करते हैं, और आशा करते हैं कि आगे भी पर्यटन विभाग के साथ मिलकर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पर्यटन के विकास के लिए, पर्यटन के हितधारकों के लिए जो भी काम होगा उसमें अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स अपना भागीदारी निभाएगा। मैं पुनः एक बार आपका पूरा अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में। साथ ही साथ हमारे जितने इनवाइटेड गेस्ट हैं सब ने अपना समय निकालकर आज इस मीटिंग में आए। मैं आप सबका और हमारे तमाम इनवाइटेड गेस्ट का मैं पुनः एक बार इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। एसोसिएशन के संयुक्त सचिव सैकत विश्वास ने अपने विचार रखे कि अंडमान टूरिज्म इज गोइंग थ्रू ए बिग लीप। जो आप लोगों को पता होगा कि प्री कोविड लेवल से भी हमने अराउंड 40% इंक्रीज़ किया है इस साल का टूरिस्ट अराइवल में। अराउंड अभी हमारा एक कमेटी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले थे, सो एलजी साहब वाज वेरी ग्लैड एंड हैप्पी कि वी हैव क्रॉस्ड द 7 लाख फिगर, जो कोविड से पहले 5 लाख फिगर था, तो टूरिस्ट अराइवल का 7 लाख का फिगर क्रॉस कर गया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा एंड विद द हेल्प ऑफ द अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसिडरिंग द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो टूरिज्म सेक्टर में होने वाले, इनको देखते हुए और बहुत ज़्यादा स्कोप है अंडमान में टूरिज्म का। सो आई लाइक टू थैंक अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल द सपोर्ट रेंडर्ड टू द टूरिज्म सेक्टर मैम, एंड स्पेशली आपको पता ही है विद द जो बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले, स्पेशली आप स्वराज द्वीप में देख रहे पोर्ट टर्मिनल का काम जो काफ़ी टाइम से रुका हुआ था वो भी शुरू हो गया है। नेशनल हाईवे का काम फुल पेस में चल रहा है। तो इन प्रोजेक्ट्स के साथ में और ग्रेट निकोबार में ट्रांसशिपमेंट हब बन रहा है विच इज़ गोइंग टू कम्प्लीटली चेंज, है ना, जो काया पलट जिसको बोलते हैं होने वाला है। अंडमान आइलैंड्स का नया एयरपोर्ट टर्मिनल बन चुका है और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी शुरू हुआ है, एंड उसमें कुछ हिंड्रेंसेस है बट होपफुली विल बी एबल टू कम ओवर। और अंडमान में AATO के बारे में अगर मैं बताऊँ तो जैसे विनोद सर ने बताया कि AATO 2005 में 18 मेंबर्स के साथ शुरू हुआ था एंड वी आर 134 मेंबर्स स्ट्रॉन्ग नाउ, है ना। सो आईड लाइक टू थैंक आवर प्रेसिडेंट श्री M विनोद, एंड आईड लाइक ऑल ऑफ यू टू गिव हिम ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिज लीडरशिप। एंड जैसे विनोद भाई बार बार बताते हैं कि वी आर वेरी प्राउड कि जो हमारे फाउंडर मेंबर्स थे, जो 18 मेंबर्स, वो आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये किसी भी एसोसिएशन के लिए 20 साल के बाद एक बहुत ही प्राउड की बात है। So I'd like to thank him once again, and also I'd like to thank all members of AATO
और हम चाहेंगे कि ऐसे ही हम जुड़े रहे और मेंबर्स अभी हम इतने पेज से बढ़ रहे हैं, हर हफ्ते करीब हमारे 3-4 मेंबर्स नए नए जुड़ रहे हैं एंड आई एम वेरी ग्लैड कि जो हमारा यंग जनरेशन है वो टूरिज़्म को एज सीरियसली एज ए कैरियर अपना रहा है. और अंडमान में एज वी ऑल नो टूरिज़्म इज़ द ओनली सोर्स ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रादर. तो I'd like to request कि हम लोग जो भी टूरिज़्म लाइन में आ रहे हैं, टूरिज़्म को एज ए कैरियर अपना रहे हैं, let us all do these our business ethically and also in a sustainable way. And Director ZSI is here. He'll be briefing us about how sustainable tourism can go hand in hand, है ना, टूरिज्म के साथ में नेचर को भी प्रिजर्व करते हुए, ताकि हम हमारे आगे वाले जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के जाएं. इंडिया टूरिज्म के सहायक निदेशक वेल मुरुगन ने पर्यटन मंत्रालय के संचालन के बारे में बात की. People here are multilingual. I mean, how best you can be tourist friendly. You speak all the languages that matter in India in addition to the European languages. It's a wonderful place. I'm just 1 month old here. Thanks to Mr. Vinodji, President AATO, I got to know everybody. But here, for the first time again, I get to meet Secretary Madam. It's a very good thing. Madam, I'm really privileged to meet you. And we'll be doing a lot of things together in the future. Now, let me explain how Ministry of Tourism functions. We do have a ministry in Delhi who provide financial assistance to all the states and UTs. There are schemes such as Swest Darshan, which is the development of circuits. Even in Andaman, there are many schemes. Even Nail Island, many of the beaches have been developed under this scheme. And there's another scheme which is called Prasad, which is about pilgrimage tourism. Be it Hindu, Christian or Muslim, whatever, that area would be developed for the purpose of pilgrimage tourism. And we do provide central financial assistance to the proposals that is put forth by the state government or UT government. So that's at the central level. Apart from that, we do have 19 offices all over India. Don't think Andaman is neglected. It is not that all the states in India have an India Tourism Office. Many states, they don't have India Tourism Office. One India Tourism Office govern or take control of 3-4 states. So Andaman, we do have office from 1983. Unfortunately, we are understaffed. I am the assistant director, and all I have is only one peon. So whenever you want to meet me or anything, just give me a call and come, because most of the time I'll be out there on the ground work or two. So this is the thing, and I am very happy to meet many of the people. Some of the people I have met in Chennai, they couldn't identify me. I identified them rightly. Bhunesh Madam, I'm referring to you. I thanks so much to Mr. Vinod, President. Thanks to him, I got to know many of the people who matter in the tourism industry within a span of 1 month. So that's one good thing, ma'am. And I have seen our history of our association with AATO. We have done a lot of programs in India tourism. At the state level, ma'am, at your level, our ministry, any proposal that state proposes to bring forth, it will be dealt in Delhi. And at our level, we do give recommendation and all that stuff, and it is done accordingly. विशेष अतिथि डॉक्टर शिवा पेरुमान ने अपने संबोधन में कहा कि इन द्वीपों में पशुओं और पौधों की कई प्रजातियां हैं, जिसके माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है. If you see our island, we are rich in diversity compared to any other ecosystem of our country. Because of isolation of this long isolation, our islands having more number of endemism, both animal group as well as plant groups. And our landmass is only 0.25% of our geography area of our country, but our islands supporting more than 10% of our reported animal diversity of our country. And we have several specific species, animal species as well as plant species, which you cannot have anywhere in the globe. Particularly if you take a bird example, we have 30 pure endemic species which are available only in Andaman group as well as Nicobar group. If anybody wants to see in wild, they have to come down to our island group. And our islands, because of this rich biodiversity, we are part of 2 biodiversity hotspots. There are 38 biodiversity hotspots in the world. India is covering 4 biodiversity hotspots.
Our island groups is part of two biodiversity hotspots. One is Indo-Myanmar biodiversity hotspot, another one is Sundaland biodiversity hotspot. Entire Nicobar group comes under the Sundaland biodiversity hotspot. Andaman comes as the Indo-Myanmar biodiversity hotspot. The species which are very, very much important and specific species which we have in our island, particularly Narconda hornbill, which we have only in the Narconda island. So among the 64 species of hornbill which we have in the globe, only smallest home range species and the size also very, very small species. Similarly, we have Nicobar megapod. We have 22 species across the globe. We have two species. One is Central Nicobar, another one is Great Nicobar and the Little Nicobar group. And we have one of the largest terrestrial crab. Normally, you will be seeing crab in either freshwater ecosystem or marine ecosystem. We have one crab, like name is called the coconut crab or robber crab, which can grow up to 4 kilo, which we have in distribution in Nicobar group, also Sentinel group of islands. And we have Great Nicobar serpent eagle. Among the 38 species of serpent eagles found in our island, this is one of the smallest eagle, which we have only particularly Great Nicobar and Little Nicobar group of islands. Similarly, several species of endemic butterflies, endemic insect, and plant species, more than 3,500 plant species reported by Botanical Survey of India. Again, more than 30% are endemic because of, again, isolation. And our islands, we are our landmass, of course, 8,249 square kilometer. We have long length of coastline, 1,962 kilometer. And if you take ecosystem, we are having all type of ecosystem. We have seaweed ecosystem, we have seagrass ecosystem, we have coral reef ecosystem, we have mountain ecosystem. Of course, we have grassland ecosystem also in the Nicobar group of islands. And compared with our Western Ghat or Himalayas, we don't have highest peak. Our peak only 732 meter is Saddle Peak, and Nicobar is 630, that is Mount Tulian. Again, we have a couple of volcanic islands. As you know, Narcondam Island is extinct volcano, Barren Island still active volcano, and our island is separated by 10-degree channel, which is Andaman group and Nicobar group. Those who traveled particularly by ship, especially if you travel in monsoon month, June, July, August, we can see that turbulence. So only that when their ship crossing the 10-degree channel, the captain will make sure will be crossing midnight, so people will not take issues. And very interesting, how does a name derived? So Andaman or Nicobar. Very interestingly, this Andaman name derived from Malay word of Handuman, and Nicobar is another very interesting. Say Nicobar or Nakavaram is Nakavaram or land of naked. It's a Tamil word which is written in the Tanjavur temple during the Chola period. So Nakavaram derived as a Nicobar and Handuman derived as Andaman. And recently one of the new species of frog we named as a Nakavaram. So that is a very interesting. And we are very, very rich in biodiversity also, as well as other ecosystem diversity also. I am coming to the sustainable tourism. What is sustainable tourism? It is nothing. It's a balance between environmental conservation, community well-being, and visitor satisfaction. Are we doing? Some of the places we are lacking. I can point out visitor satisfaction. Even I discussed with Vinod sir also sometime. Many places we are lacking basic amenities. Even 2 days back I was visited Mundapagat beach after a long time. There also we are lacking visitor satisfaction. So that also we have to take care of. And the sustainable tourism is island ecosystem. This is a very important because island is a only ecosystem. If anything happen, immediately will get disturbance, immediately will get effect. And what are the key principles for practice of sustainable tourism? We can go for environmental protection, so minimizing the impact of tourism for fragile ecosystem, and promoting responsible tourism practices such as reducing plastic waste, conserving resources, and protecting marine life.
developing eco-friendly accommodations and infrastructures, and community engagement, involving more communities in tourism planning and stakeholders meeting, supporting local business and artisans, promoting cultural preservation and heritage tourism. Here also we are lacking. We can promote more cultural tourism, and ensuring tourism benefit are shared equally to all local holders, local communities, and economic viabilities, considering sustainable tourism business that are economic viable and contribute to local livelihood, diversifying tourism activities beyond traditional beach tourism, promoting sustainable tourism product and services, and again monitoring and evaluation. Here also we are lacking. Madam, actually we are opened North Bay and Havelock for tourism water sport activities. A couple of years back, I think our administration island, 12 or 19 islands, they were asked us to do the survey, whether it's all islands, identified islands are suitable or not. We submitted the proposal, but it is lying in the department, tourism department. Because if every alternative, even if you are not changing every year, at least if you are changing every alternative years, it will be benefit for tourists as well as it will be benefit for biodiversity. Why? Because as a researcher, as a scientist, I know what is in North Bay. Because all dead corals, those who are coming from all the way spending huge amount of money, if you are showing good species of coral, good patches of corals, they will be happy, more happy than diving in North Bay or even again in thank you, in Elephanta Beach. Yes, at least if you are shifting every 2 years, so natural growth also automatically it will come. People also will be benefited. So this is some submission, because we submitted long back, 2 years back, Anil must be knowing where it is lying. And specific to islands, because our islands, wherever you go, it's all vulnerable area. There are endemic species are there. There are endangered species are there. So whenever we are going, we have to take care of our island whenever we are doing tourism activities. And some other example for tourism in island ecosystem, we can go for ecotourism, because still we are lacking ecotourism activities. Community based tourism also we can start. Then responsible fishing and marine tourism. So what are the sustainable tourism activities? Again we can promote. Of course we are having scuba diving and snorkeling. Again we can go for some more extended snorkeling. But nature walk and bird watching is only a few of our islanders they are doing bird watching as a tourism and bird guiding. But we can promote natural walk, butterfly walk, and if you have small piece of land, you can start butterfly garden. That also will be added attraction. And bird watching, only few areas people are taking. That also very good business. Of course, 20 years back, I also handled a couple of groups when I was in Kerala. And of course, Kakain, where we can promote again. And how can contribute to respect the nature? We have to respect the nature, follow designated trail, and avoid littering, adhere guidelines when visiting protected areas, and reduce plastic use, support local, particularly local owned accommodations, eateries, and purchase souvenirs from local artisans, and educate yourself. And in the end, we are nearing to the World Environment Day, which is 5th June. We are celebrating every year across the globe. And this year theme is ending plastic pollution. So we can jointly, we can organize, of course, every year, last 5, 6, 7, 8 years, regularly we are conducting, and we invite our Andaman chapter to also jointly do some programs, also tourism department. And pollution, plastic pollution has been becoming a global problem. So we have to take a stand to stop plastic pollutions and the sustainable development goal under the UN General. And what will happen on the World Environment Day? We can organize several promotional events and sustainable development activities. And how can you help? You can reduce, recycle, reuse, and support policies that promote sustainable practices, advocate policies and reduce plastic pollutions,
and volunteer also we can make awareness, and we can also organize several beach cleaning activities. And happy World Environment Day. Thank you. एएनसीआई के अध्यक्ष डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने अपने वक्तव्य में कहा कि इन द्वीपों में पर्यटन ही बड़ा उद्योग है। आपको पता है कि हम टूरिज्म क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास अंडमान निकोबार में टूरिज्म छोड़ के और कोई इंडस्ट्री को हम लार्ज स्केल में नहीं ला जा सकता है, क्योंकि हमारे पास में रॉ मटेरियल की कमी है, मार्केट की कमी है। अगर हम रॉ मटेरियल को मेनलैंड से इंपोर्ट करके यहाँ लेके आके प्रोडक्शन करके बाहर लेके जाके फिर बेचेगा तो हम कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सारा कॉस्टिंग जो है खाली ट्रांसपोर्टेशन में लग जाएगा। तो हमारे पास नेचुरल एक ही उपाय बचता है कि हम टूरिज्म में क्या है कि हमें कुछ करना नहीं, हमारे पास जो उपलब्ध है वो दुनिया को दिखाना है, उनको बुलाना है, उनसे पैसा लेना है। तो इससे अच्छा इंडस्ट्री कोई है ही नहीं है। अंडमान में हमारे पास इतनी वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ है टूरिज्म सेक्टर में कि हम उसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हम तो सिर्फ अभी हैवलॉक और नील तक की केंद्रित है या पोर्ट ब्लेयर तक केंद्रित है। मैं प्रशासन या हमारे डायनामिक मैडम टूरिज्म सेक्रेटरी से भी अनुरोध करूंगा कि और एक्सप्लोर कीजिए, जिसमें कि बहुत सारे जो अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड्स है, जो डेस्टिनेशंस है, जो कि मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक भी विजिट किया हूँ वहाँ में जो हैवलॉक से भी बहुत ही सुंदर बीचेस है, कोरल्स है, और ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए स्पेसेस अवेलेबल है जिसको हमने अभी तक का एक्सप्लोर नहीं किया है। एक वन ऑफ द प्लेसेस रोस एंड स्मिथ आइलैंड, जो 2 आइलैंड को एक सैंड बार से कनेक्ट किया गया है, और दोनों के साइड में जो सी है इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर के साथ में आपको नेकेड आई से आपको पूरे कोरल्स और व्यूज दिखाई देगा अगर आप उसमें पैदल वॉक करेगा, जब आपका लो टाइड पानी रहता है तो तब। तो ये सब प्लेस को बहुत कम प्लेस में दुनिया में देखने को मिलेगा। मेरे पास में ये प्रिविलेज है कि मैंने अपनी जीवन में करीब 40 कंट्री का विज़िट किया है, 5 कंटिनेंट का विज़िट किया है, तो सारे टूरिज्म एरिया में विज़िट किया है। तो टूरिज्म में जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, जो दुनिया को दिखाने के लिए हमारे अड़ोस पड़ोस में जो टूरिज्म से रिलेटेड अपना इकोनॉमी को बनाए रखा है, अपना जो देश का उनका इकोनॉमी जो टूरिज्म से रिलेटेड है, जैसे मालदीव्स हुआ या थाईलैंड हुआ, तो हमारे पास है बहुत कुछ दिखाने के लिए। हमारे पास जैसे कि 836 आइलैंड है, 836 को तो छोड़िए, हमने कम से कम एक 20 आइलैंड को भी डेवलप कर दिया दुनिया को दिखाने के लिए। तो हमारे पास बहुत कुछ है लोगों को इन्वाइट करने के लिए। इन्वाइट करने का तरीका यह है कि हम अपनी जो खूबसूरती है ये दुनिया को दिखाएं। दुनिया को दिखाने के लिए हमको मंच देना पड़ेगा। जो ऑटो जो है अपने लगातार प्रयास कर रहा है, लास्ट 15 साल से 20 साल से प्रयास कर रहा है, तो इनका प्रयास की वजह से हमारे यहाँ टूरिज्म का जो अराइवल है ये बताते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि हम करीब 8 लाख के आसपास लास्ट ईयर टूरिस्ट का अराइवल है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार एयरपोर्ट का जो डाटा के हिसाब से, जो कि करीब 40 से 50% अबव देन द प्री कोविड जो हम लोग रिकॉर्ड किया था उससे भी ज़्यादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके ये हमारे पास में करीब हम लोग को 1 मिलियन क्रॉस करेगा इस साल या नेक्स्ट ईयर में क्रॉस कर देगा। 25 या 26 तक का हम 1 मिलियन क्रॉस कर देगा। तो हम टूरिज्म को बहुत अच्छी स्केल में, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, एक सब्सटेंशियल टूरिज्म जिसको कि हमारे इकोलॉजिकल इसको डैमेज भी ना हो और हमारी कल्चरल को भी डैमेज ना हो, उस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इसको और वास्ट तरीके से इसको एक्सप्लोर करें। इसमें क्या नाम है, अभी हम लोग बर्ड वाचिंग का भी एक टूरिज्म है। लास्ट ईयर रिकॉर्ड किया कि 300 से ज़्यादा जो टूरिस्ट है, फॉरेनर्स है, इंडियंस है, बर्ड वाचिंग के लिए जो जगह आइडेंटिफाइड है वहाँ में फोटोग्राफी के लिए आया हुआ है। इसके अलावा बिटनाबाद के आसपास में कोई एक स्टार वाचिंग का भी अरेंजमेंट किया गया है, वो भी अच्छा प्रमोट किया है। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ में हम लोग के जो इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं वो चाहे कि यहाँ में एक बर्ड पार्क को भी बनाया जाए, जो कि शाम के वक्त में सभी को पता है कि सुबह से शाम 5 बजे के बाद में टूरिस्ट के पास में एक्सेप्ट लाइट एंड साउंड के अलावा कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। तो कुछ बर्ड पार्क को डेवलप किए, कोई स्काई डाइनिंग को डेवलप किया जाए, इस तरह का प्रपोजल लेके आए, हम एडमिनिस्ट्रेशन से उनका SOP बनाए और नया जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को आगे ले आए, ताकि हम अल्टरनेटली हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ के जो आने वाले जनरेशन या यूथ जनरेशन हर किसी के हाथ में एक एम्प्लॉयमेंट हो, एक जॉब अपॉर्चुनिटी हम सबको दे,
क्योंकि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। हम सरकार के ऊपर में डिपेंड होएगा तो हमारी पॉपुलेशन का 10 से 15% मैक्सिमम सरकार जॉब दे सकता है। वो 6 महीना पहले ही सारे लगभग 5000 पोस्ट को फिलअप कर दिया। तो अभी जो बचा हुआ है हमको अपने आप में खुद को जॉब ढूंढना है। तो एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के बजाय हम एम्प्लॉयर बनना है। एम्प्लॉयर बनने का अपॉर्चुनिटी हमारे पास में फिशिंग सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर द जो मोस्ट एडवांटेज है, जिसमें कि हमें कम इन्वेस्टमेंट में हम अपने आप को एक एम्प्लॉयर बन सकता है। हम एक एम्प्लॉयर बना तो साथ में हम 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। तो मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि हर किसी को मोटिवेट करे कि एम्प्लॉयर बनने के लिए, ना कि एम्प्लॉय बने। एम्प्लॉयर बनने से वो अपने साथ में कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकता है और नए नए सेक्टर में नए नए लोकेशन को डेवलप किया है। जो अननोन डेस्टिनेशन है हमारे यहाँ, उसको डेवलप किया जाए। हम एज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा आपके साथ है। जो भी मैटर हमारे संज्ञान में लाया जाएगा, मैं सेक्रेटरी मैडम टूरिज्म डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरी और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो डायनामिकली वो कहते हैं कि जब भी आपके पास कोई नया प्रपोजल ले आओ, हम उस पर काम करेंगे करके। तो हमें उम्मीद है कि वी आर इन द सेफेस्ट हैंड जैसे टूरिज्म एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी मैडम और चीफ सेक्रेटरी साहब और एलजी साहब के हाथों में। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ टूरिज्म का इनफ्लो बहुत ज़्यादा होगा आने वाले वक्त में। 25-26 में ये हम 1 मिलियन क्रॉस करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद है। कार्यक्रम में एसोसिएशन की ओर से पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि सचिव ज्योति कुमारी ने इन द्वीपों में पर्यटन उद्योग पर बातचीत करते हुए कहा कि स्टेक होल्डर, पर्यटन विभाग और पर्यटन मंत्रालय ये तीनों साझेदार हैं। आज यह साझेदार एक मंच पर है। The enthusiasm of the tour operators, the hotel owners, the boat operators is on a high. We have had a good year this year, and the effect that pandemic had on the tourism in India and in the islands also seems to be covered up, and maybe by the next year we'll have much better footfall in the islands. Having said that, we being a UT, we have 3 different partners in the tourism industry. One is of course the stakeholders, the industry partners. The second is the Department of Tourism, and the third is the Ministry of Tourism. And it is heartening to see that all of us together are on this platform, interacting with each other, knowing each other and understanding each other's issues so that we can resolve this for a better experience for the tourists. Going ahead, I think it would also be a challenge for the tour operators, mostly in the islands, as the market is opening up. We all know that the mobile network has come to the islands. More and more information about the islands is going outside, and people who were earlier dependent on the tour operators to curate the experience will also be exploring it independently. So it is a challenge now to retain that market dominance which you had over the years, and that will only come when the experience of the tourist is very good. The social media is out there, the people, influencers, everybody is posting on the social media, and that is why our experience of the islands has to be very good and has to match up to the global standards. Now in this, the department is opening up a lot of new avenues like the caravan tourism, the houseboat policy, the astro-tourism policy, which Uttarakhand and Ladakh has done to a very great extent because they have a lot of areas which are dark reserves. So these policies are out now. We would request that the private owners, the private entrepreneurs come up with their own plans which we can support. And these areas specifically where you find it to be very lucrative, those can develop as hotspots. Now these areas, mostly you would have better knowledge about what is the connectivity, how much hotels would be nearby, whether it can be an astro tourism park which can be developed or a party can be developed. So likewise on different issues which the department is working on, we would also need inputs from the stakeholders. In the second leg, since now we have a new assistant director who has been posted here from the Ministry of Tourism, we are also looking forward to having a lot of partnership with the Tourism Ministry. The Tourism Ministry gives you a platform which is much bigger than just the UT. It gives a platform in the national level, in the international level.
And this would be a great opportunity for us to now move to the next leg of attracting not only tourists but also investments, ideas from outside the country. It's a good time for tourism because we are again opening up a lot of new avenues. A lot of tourists have also visited this year the Little Andamans, and on the basis of the request or the problems which the tourism industry in Little Andamans is facing, we are trying to solve it so that in the next year the tourist footfall in all these areas increases. So I look forward to having a very interactive session, very fruitful session, and having a great cooperation between all the different stakeholders for the betterment of the tourism industry. श्री मोहम्मद एच जाडवेड ने बीपो में पर्यटन के माध्यम से रोजगार सृजन पर अपनी बात कही। As Madam has rightly said, we are coming out of a high. 2024 was probably the best year the islands have had. December 2024 was the highest figure of arrivals in the airport in Port Blair. So we are coming off the high, but we cannot lie back on our laurels, and we have to strive harder to see that we grow, because without growth the future is not there. Just to give you a perspective, in my opinion, considering a figure of 7 lakhs of tourists which have come here, our islands would have generated a revenue, the tourism industry, of around 2000 odd crores. Considering that a person who comes here spends about 20 to 25,000 in various services he takes in the island. So this group of tourism is contributing almost 2000 crores in the islands, which is leaving out the airfare component which they spend here, which is a substantial amount of money. Apart from that, we have employment generation of anywhere between 15 to 20,000 people. So a very substantial portion, but there is a long way to go. Let us look at the closer islands in the group. You have Phuket, which gets 8 million tourists, Langkawi, which gets about 2.5 million tourists. So we are only at 0.75 million. So even if we are growing to double this, there is a huge opportunity, and the revenue generated by these islands is also huge. So there is a lot of work to be done by all stakeholders, which of course includes the government and the private players, to create necessary infrastructure, hotels, logistic arrangements, restaurants, policies have to be made. So these are some of the things, and I am sure Madam is keen and into it, and hopefully our international presence grows, because that is one area where we are very, very weak. Our domestic tourist is almost 95 to 98%. So this is the area where we should focus on. Domestic tourism, because of India's large population, will always keep growing, and which is welcome also. But I think we must turn our focus to some good international destination. Madam incidentally is also the Secretary of Civil Aviation and Transport. So these are very linked to tourism, and I am sure her efforts to increase international flights and transport in the islands will also be helpful. एसोसिएशन की ओर से अन्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ हितधारकों की बैठक संपन्न हुई। I would like to extend our heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Srimati Jyoti Kumari, IAS Secretary IPNT, for gracing this occasion with our presence. Your words of wisdom and guidance have inspired us all. I would like to thank our special guest, Dr. C. Sivaperuman, scientist and officer in charge, ZSI, and Sri N. Velumurugan, Assistant Director, India Tourism, for their valuable contribution on this event. To Dr. Chandrasekhar, President, ACCI, and MD Mohammad Jadwadji, Chairman, Chapter Chairman, IITU, thank you for all your support and guidance. Thank you all our members and media person. Thank you all.